Okay. Today we will discuss some of the theoretical concept of Python. As from the beginning we were doing practical portion only. So this is the first topic of Python, that what is Python. Okay. Python is a programming language. Python is a high level programming language. It was developed by Guido van Rossum. Okay. Guido van Rossum. And it was implemented in 1989. Okay. What is programming language? Now the question is, what is programming language? Okay. Programming language is a language of computer in which we can give some set of commands to make the computer to do something. An ordered set of instruction to be executed by computer to carry out a specific task is called a program. And the language in which these programs are written, that is called programming language. Like calculator is an example of small software, your games are example of small software. All these softwares are created using a programming language. See, we all know that computer is a electronic machine, and electronic machine always understand language of 0 and 1. Anybody will tell me what is 0 and what is 1? Ma'am, bits. Bits 0 denotes 0 denotes off, है ना, and 1 denotes on. मतलब जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज. करंट इज देयर, current is not there. Computer is an electronic device and it understands this much only, that electricity is there and electricity is not there. So this is machine language. Okay, it understands only 2 digit, and it is very much difficult to understand this language for us. Okay, so to make understand computer our language, we created interpreter and compilers. Basically languages are of 2 type, machine level language and high level language. We usually study high level language nowadays. Earlier programmers were doing low level language or machine level language. मशीन लेवल लैंग्वेज जो होती थी उसमें हम जो प्रोग्राम्स के कोड देते थे, वी यूज टू गिव दोस कोड्स इन 0 and 1, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में देते थे. But in high level language, we write our program in our language, like in English, Chinese, Hindi. In any language, you can write the program. But usually we Indian use English language to write the program. So this is high level language. Python, C, C++, Visual Basic, PHP, Java, all these languages are high level language. These are easily understandable by us. Okay, we write all the codes in our language. Any keyword you understand? Any keyword you understand? Keywords, we have done many keywords. Student, unmute yourself. Ma'am, reserved words. हाँ, reserved word कौन से यूज किया हमने? मैम पाइथन में. हाँ, पाइथन में. मैम if किया है. if किया है. print किया है. print किया है. देखो, if is a English word, we can understand its meaning very easily. Print is an English word, we can understand its meaning very easily. Like we are giving print command, it means we are going to print somewhere.
In computer, we will print on printer or we will print on screen. So these words are easily understandable. Why? Because we understand English language. So these languages are high level language. In machine language, we direct communicate with machine. In its language, we give the commands in the form of 0 and 1. So machine language is very fast because we are communicating directly. But in case of high level language, we are using some mediators. Those mediators are, which I told, those mediators are compiler, and second mediator is interpreter. What is the difference between compiler and interpreter? compiler compiler actually compile the whole program, means it convert the whole code and create an object file, and after that run the program. But what interpreter will do? Interpreter will convert one line in computer language, in machine language, and then run it again. It will convert second line, then run it, then it will convert third line. Means the work of conversion and running of the program goes parallelly. Both works are doing simultaneously. One line converting, one line executing, second line converting, second line executing. Okay, this is the work of a interpreter. And what compiler do? Compiler change the whole program, convert it into machine language, create a file, object file, and after that run it. Then what is the difference between compiler and interpreter? कंपाइलर अगर एक भी एरर होगा ना तो आपका प्रोग्राम रन होना स्टार्ट ही नहीं होगा, क्योंकि ये उसको एक साथ कन्वर्ट करता है। तो अगर कहीं भी एरर है ना तो वो उसको रन नहीं करेगा। लेकिन अगर इंटरप्रेटर हम यूज कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता है कि ये ऊपर की लाइन रन कर देगा। सपोज 7 lines are there and mistake is in 6th line, then it will run 5 line. After that it will show that error message that error is in 6th line. Okay, this is the difference between compiler and interpreter. अगर कंपाइलर, जैसे हम C++ में प्रोग्रामिंग करते हैं ना, अगर एक भी एरर होगी, सिंगल एरर इज देयर, तो आपका प्रोग्राम रन होने का चांस ही नहीं है। लेकिन जैसे पाइथन में क्या होता है, अगर आपने 10 लाइन्स यू हैव रिटन और 7th लाइन पे एरर है तो ऊपर की 6-7 लाइन ने ये डिस्प्ले कर देता है ना। इसको रन करके देखें एक बारी। Yes, ma'am. Wait, let me run Python first. Print hello. This is first line, print hello 2. This is second line, print hello 3, and I'm not closing the bracket. Okay, now this error will come. Print hello 4. Okay,
Now I'm going to run it. Okay. It is asking to save the program. Save. See, invalid. Okay. We will see on the output window. मैम ये तो MS वर्ड का ही दिखा रहा है यहाँ स्क्रीन शेयरिंग में। यस मैम। अच्छा, वर्ड ही आ रहा है, ये पाइथन नहीं डिस्प्ले हो रहा आपकी स्क्रीन पे। नो मैम। चलो, leave it. I will show it in practical session. Okay. Practically, I will show it later. Okay. Okay मैम। Now, second topic is features of Python. Question from this topic can come for 3 marks or 2 marks, 3 marks. Okay. Python is a high level language. You all know what is high level language? Python is a high level language. We already discussed high level language. High level language means in which we will write code in our language, in English, Hindi. Okay. It is a free, means you can download it free of cost. You need not to pay anything for Python. And it is open source language. Now, what is open source language? See, open source and closed source, two type of languages are there. Open source means we can get the source of the Python. Source का मतलब क्या होता है बच्चों? The code in which the language is written. जो Python है, Python भी तो कहीं ना कहीं किसी ने लिखी है ना प्रोग्रामिंग करके। जैसे हमने कैलकुलेटर को क्रिएट किया तो कैलकुलेटर के लिए कहीं ना कहीं हमने कोड लिखे। ऐसे किसी ने पाइथन क्रिएट की है तो पाइथन के लिए भी तो कहीं ना कहीं कोड लिखे हैं। Those codes are called source code. Okay. सो पाइथन इज अ ओपन सोर्स लैंग्वेज। मतलब जब हम पाइथन डाउनलोड करते हैं तो हम इसका सोर्स भी देख सकते हैं कि जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये किस तरीके से बनाई गई है, और इसमें हम अपनी खुद की पाइथन भी क्रिएट कर सकते हैं। सपोज करो हमने पाइथन को डाउनलोड किया, इसका सोर्स कोड कॉपी पेस्ट किया और उसमें हम मॉडिफिकेशन करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी पाइथन को मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके। So whenever you download the Python, you have to download the Python from python.org. Okay, यहाँ से डाउनलोड करेंगे आप लोग तो ओरिजिनल पाइथन डाउनलोड होएगी। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है पाइथन 3. Okay, the latest version is Python 3. It is an interpreted language. Interpreted भी हमने करा है ना अभी, compiler and interpreter होता है। Compiler में the whole code is converted into machine language. Once after that it is executed, a separate object file is created. और इसमें Python में क्या होता है, ऐसी कोई object file नहीं create होती है, इसमें डायरेक्ट आप क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट आप 1 बाय 1 लाइन को कन्वर्ट करते मशीन लैंग्वेज में और फिर उसको रन करते। तो पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ओके। पाइथन प्रोग्राम्स आर इजी टू अंडरस्टैंड as they have a clearly defined syntax and relatively simple structure. जो पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी ना उसमें काफी प्रॉब्लम, जैसे सी सी प्लस प्लस में हमें हर एक लाइन के एंड में सेमीकोलन लगाना है। अगर ब्लॉक है तो उसको जैसे इफ के बाद हम कमांड्स लिखते हैं ना, इफ के बाद जो स्टेटमेंट्स लिखते हैं, स्टेटमेंट स्टार्ट होने से पहले हमें करली ब्रैकेट ओपन करना, फिर जहां पे स्टेटमेंट खत्म हो रही है वहां पे करली ब्रैकेट क्लोज करना। तो काफी सारी उसमें डिफिकल्टीज थी, तो उसको थोड़ा सा वो भी इजी टू अंडरस्टैंड है बट पाइथन के कंपैरेटिव नहीं। पाइथन इज मोर इजी टू अंडरस्टैंड। व्हाई इट इज इजी टू अंडरस्टैंड? बिकॉज its syntax are clearly defined. Okay. Python is case sensitive. Anybody wants to try case sensitive?
Students, case sensitiveness I told you earlier. मैम अगर हम कोई चीज अपर केस में लिखेंगे तो वो अपर केस में समझेगा, और अगर उसी चीज को हम लोअर केस में लिखेंगे तो वो लोअर केस में समझेगा उसे. Okay, means upper case and lower case, two different things are there. Like we are writing Divya, the whole letters are capital somewhere, and on other place all the letters are in a small case, then it will identify it as two student. Okay, मीन्स इट इज केस सेंसिटिव. अगर हमने इसको किसी चीज का नाम कैपिटल लेटर में दे दिया है, देन वी हैव टू यूज दैट नेम ओनली इन कैपिटल लेटर. अगर हम उसको स्मॉल लेटर्स वगैरह में क्रिएट कर लिखते हैं कहीं पे, तो उस केस में ये उसको नहीं समझेगा. ठीक है, इसके लिए वो दूसरा कोई वेरिएबल या दूसरा कोई नाम हो जाएगा. ओके, लाइक एग्जाम्पल इज ऑल्सो गिवन, कैपिटल नंबर एंड स्मॉल नंबर, दोनों में डिफरेंस है पाइथन के लिए. पाइथन इज पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. अब क्रॉस प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं इसको. अब ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज करो आई एम वर्किंग in Windows, something I am going to create in Windows, it will run in Windows only. Okay, but when we are creating programs in Python, those programs can be run on any software. Okay, that's why it is platform independent, means it can run on various operating system and hardware. Okay, तो हमें ऐसा नहीं है कि भाई हमने विंडोज के लिए कुछ बनाया तो वो सिर्फ विंडोज में ही चलेगा. जैसे आपके एंड्रॉइड के सॉफ्टवेयर होते हैं वो उसमें नहीं चलते ना एप्पल में. यस और नो? नो मैम. तो जैसे कुछ अगर हमने एंड्रॉइड के लिए ऐप बनाया तो वो एंड्रॉइड में ही चलता है. इट मीन्स कि वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, वो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि आपने एक ऐप बना दिया, उसको आप किसी में भी रन कर सकते हो. ओके, पाइथन हैज अ रिच लाइब्रेरी. लाइब्रेरी हमने अभी यूज नहीं की है. लाइब्रेरी मीन्स पहले से ही इसके पास काफी बने हुए फंक्शंस हैं. predefined functions are have predefined functions are there in Python which we can use. Okay, like we want to calculate square of a number, then already function is there. We want to calculate sum of two or three numbers, then their function is available. We want to calculate average. So many functions are there to perform mathematical or other scientific task. Okay, Python is also helpful in web development. Okay, development means web development means we can create web pages. बच्चों try to be interactive. Okay, सही नहीं तो गलत बता दो आप लोग. But try to answer my questions. Okay. Okay, ma'am. Python is also helpful in web development. Web मैम development. हाँ, मैम स्क्रीन शेयरिंग नहीं आ रहा मैम वीडियो में. स्क्रीन शेयर मेरे यहाँ से तो हो रहा है बेटे. मेरे में नहीं आ रहा, शो नहीं हो रहा. Let me check. मैम मेरे में भी शो नहीं हो रहा मैम. Wait. Now is it coming? यस मैम. ये सब शो हो रहा है. Okay. यस मैम आ गया. Okay. Where we were, Python is also helpful in web development. Okay. Many popular web services and applications are built using Python. Okay. Web development means web page. You are creating web pages. This is called web development. Okay. Python use indentation. Indentation का मतलब क्या होता है? Indentation means when you are like
I have created this file in MS Word. Okay, and you can see over here a equal space is left in the left hand side and right hand side. Okay, this is called indentation, proper indentation. All the points are starting from same position. Okay, the heading is in the center. This is called indentation. तो जब तुम पाइथन करते हो तो उसमें भी तुमने देखा होगा ना कि if condition you are giving, then after pressing the condition automatically the cursor shifted to the 4-5 spaces right. शिफ्ट हो जाता है ना राइट वर्ड? yes or no? ma'am. yes or no? Yes. हाँ, तो Python uses indentation for blocks and nested blocks.